system, career advancement scheme, then legal case management system, guest house management system, core communication system, transport management system, grievance management system, file management system, inventory management system, teaching recruitment module, non-teaching recruitment module, candidate portal teaching, screening process, candidate portal non-teaching, screening process for non-teaching. Dr. Guneet Sudan to brief you about this e-governance initiative that is taken by e-governance cell of the University of Jammu. So Guneet, can you please brief? A very good morning to all of you. Basically, we have implemented Samarth ERP in the University of Jammu under e-governance initiative cell. So basically, Samarth ERP is an initiative of Ministry of Education, Government of India, and the idea is basically to deploy digital framework for the good governance and efficient governance. So there are around 40 modules under this initiative for the management of variety of workflows across 5 critical functional domains of the university administration and university operations. So we have around 24 modules which we have selected for the University of Jammu, and 12 we are 100% now ready to implement that. And in those 12 modules, we have one core module, then the employee management module, then the knowledge management module, then the leave management system, grievance management system, guest house management system, transport and fleet management system, core communication system, career advancement scheme, direct recruitment system, file management system, inventory management system, and legal case management system. So in the second phase, which is almost 80% ready, and by first week of August, we'll be launching the rest of the 12 modules and systems. That is payroll management system, budget management system, vendor bill tracking system, hostel management system, sports management system, health management system, estate management system, residence allocation system, RTI management system, and research project and management system. Sir. So at the outset, I express my sincere thanks to media people who came at a very short notice. And as usual, the University of Jammu is getting unprecedented support from both print as well as electronic media. So on behalf of the university, again, I express my sincere thanks, being the Vice Chancellor of this university. This e-governance program is launched today, and this is in sync with the e-governance program which is initiated by Government of India in 2022. And as Guneet said that Samarth portal is active since 2019. So to provide and to make the university transparent, effective, efficient, responsive, and accountable, the e-governance program is launched, and this is also in sync with the our JNK government, which is very much interested to bring all those informations to the users through e-governance. So this initiative, as Guneet said, that in 2 phases. In the first phase, we are launching more than 12 programs, and in the remaining that would be launched in the second phase. First phase is ready, and second phase, I think it will take another 3-4 months to get it initiated. So if you have any question, or if you want the details of that program, so that will be provided to you. So first thing, for any information, the students or the faculty or the non-teaching staffs are supposed to fill up the form. So first, that the newspaper, the papers which are being used to provide the information and to submit the application, उससे आप बाहर निकल गए. आप इलेक्ट्रॉनिकली अपनी सारी जो है इंफॉर्मेशन लोड कर देंगे, तो जो पोस्टल डिले होता था उससे आप बच गए. तो आपका इंफॉर्मेशन क्विक डिलीवरी हो जाएगी. आपको
देख सकते हैं हमारा जितना एप्लीकेशन फॉर्म था वो सबमिट हो गया, नहीं हुआ। सेकंड, आपको जो फीस जमा डिपॉजिट करना था उसके लिए फिर दोबारा आते थे, वो आपको नहीं आना पड़ेगा। सो आई थिंक द सिस्टम वुड बी मच मोर इफेक्टिव, transparent, responsive, and accountable by implementing the e-governance system. This would be used by the teachers, non-teaching staff, officers, students, and even the civil society people can see that what is happening in the university. सर देश भर हुए अगर हम इस चीज़ पे ध्यान दें कि जम्मू कश्मीर में बहुत से अभी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी इशू है और ई गवर्नेंस है, वहाँ वहाँ पे सही ढंग से ना पहुँच पाए, और बहुत से वहाँ के पिछड़े हुए इलाके के बच्चे जो है वो इन स्कीम से या आपके इनिशिएटिव से हो सकता है वो सपोर्ट उनको ना मिल पाए। ऐसे में यूनिवर्सिटी ने क्या सोचा है? अब मुझे लग रहा है कि एक दो पार्ट इसको हम लेते हैं। पहली चीज़ जो आपने कहा कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू ई गवर्नेंस ऑफ माय फैकल्टी, ऑफ माय ऑफिसर्स, ऑफ माय नॉन टीचिंग स्टाफ, इनको कराना, क्योंकि दे आर आल्सो नॉट दैट मच फेमिलियर एंड यूज टू विद दैट। सो एक पार्ट तो ये है टू मेक इट मोर इफेक्टिव, टू मेक इट मोर रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल। सेकेंड पार्ट है ई गवर्नेंस को लेकर के हमारी जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है वो भी अपने से लैंड रिकॉर्ड से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग, तो सब कुछ ई गवर्नेंस के माध्यम से अब वी आर आस्क्ड नॉट टू सबमिट द फाइल्स पेपर में, अब आपको इलेक्ट्रॉनिकली अपनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट में भेजनी है। तो मुझे लगता है कि अगर जो जिस हर्डल की बात आप कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके स्लोली JNK गवर्नमेंट इज एड्रेसिंग दैट एंड वेरी शॉर्टली दैट वुड बी एड्रेस्ड। क्या सरकार का जो IT डिपार्टमेंट है वो भी आधिकारिक रूप से आपके साथ शाखा बिशाखा इस पे एंगेज्ड है? Directly, if you ask me, I would say no, but indirectly yes. Why I am saying yes? This Samarth portal, that's the government of India authorized portal, and this is being run by the computer center of the University of Delhi. But वो प्रोग्राम समर्थ पोर्टल वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, एंड ईच यूनिवर्सिटी इज आस्क्ड टू शिफ्ट ऑन दैट पोर्टल। तो हम इसी समर्थ पोर्टल पर जो भारत सरकार के द्वारा नामित है उसी को हम शिफ्ट कर रहे हैं।